Hi all, this is Sneha and welcome to Green World Investor, a platform for all personal finance needs for beginners. The topic for today's discussion is financial goals for couples. In this video, we will talk about why it is important to have financial goals as couples, how can it bring an overall change in your relationship, how you can get the conversation rolling, and how is it going to overall help in overall nurturing your relationship. So we will try and cover all these subtopics through this video. I hope you will be with me till the end of the video. So let's begin the video. So money and love go hand in hand. You need to be financially independent to lead a happy and successful life full of love. And mind you, when there is no money, love can take a back seat. So it is important to have your priorities set when it comes to finance. You need to work as a team to achieve these financial goals, to set these financial goals with your partner. While financial budgeting and savings may not be the most romantic things to talk about, but it is important to have these conversations as a couple. In my view, these should be at the top of your priority list in your overall couple goals. So but before the way to start is first doing some groundwork as a couple. So number one, you should be aware of the financial goals of each other. एक दूसरे की goals को हम समझने की कोशिश करेंगे. Understanding that will help us in making an overall plan in how we can work as a couple, as a team, to achieve each other's financial goals. Then you need to be aware of each other's spending styles, each other's budgeting, each other's saving. So ये जब हम एक दूसरे की समझते हैं तो कैसे हम खुद दोनों पार्टनर्स मिलकर उनमें assimilate करके how we can achieve it as a common goal for the both of the partners, the spouses, whatever you may call. So it is important to do that kind of groundwork to begin with the financial journey that you are going to, and especially for couples and partners who are just starting up. It will be very good to know each other's style of how to go about in life. आपके goals क्या हैं, आपकी इच्छा क्या है, in what way you would like to contribute, what would you like to save for, what would you like to spend for. तो एक दूसरे की ये सब habits को जानना बहुत ज़रूरी है. So it is important to do your groundwork and कि आप कैसे you can work together as a family to plan your funds, to plan your savings and your spendings as well. So now let's see, why is it important to set these financial goals as a couple? हमें ये क्यों ज़रूरी है, क्या, why do we need to do it? So couples have shared objectives. ऐसा नहीं है कि एक अलग अपना कर रहा है, एक दूसरा अपना कर रहा है, नहीं, हमको साथ में चलना है. So they have these shared objectives, and having common couple goals will help you further ease the journey together. When you're moving together in life, it will help ease those things and also strengthen your bond in the long term. तो ये shared objectives होने के वजह से आपके ये जो goals हैं financial, ये भी common अगर हो तो ज़िंदगी और आसान हो जाएगी, I will say. Now, number two, I would like to say that spending life together needs each other to care for each other. आपको हर स्टेज में अपने पार्टनर की, अपनी स्पाउस की का ध्यान रखना है through various stages in life. As a partner, as a couple, it could be having a baby, it could be buying a new house, it could be starting a new job, or it could be then when you're old again, your child getting married, or his higher education, your medical conditions, your retirement funds. तो कितने सारे पड़ाव हैं जो कपल्स एक साथ क्रॉस करते हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव दीज डिस्कशंस एंड टू प्लान ओवरऑल कि आपको किस तरह से किधर किधर स्पेंड करना है. देखिए, शादी भी जब होती है तो हम साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, फर्दर इन रिचर और पुअरर, सो वी टेक वाउज लाइक दैट. तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव दीज डिस्कशंस, क्योंकि जब आपको साथ रहना है, साथ चलना है, लाइफ के इतने बड़े बड़े डिसीजंस साथ लेने हैं. सो इम्पॉर्टेंट टू हैव योर फाइनेंशियल गोल्स सेट, ताकि आप आगे भी इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियली और मतलब
independently in each other, but as a unit you will be able to survive. So that is why having spending lives together, it's important to have these conversations. Now these financial goals could be anything. It could start from normal investments that we do each year for our tax saving benefits, और it could be long term, short term, or any other number based financial goals आप set कर सकते हो. आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है, या फिर आपको you want to plan for other emergency funds, या फिर child education funds हो गया, या फिर हमारे home loans हो गए, medical insurance हो गया. There is so much planning involved in each stage of different types of savings options and different type of investments that we incur as a couple. तो फिर इन सब बातों की क्लैरिटी होनी चाहिए एक दूसरे को. आपको यू मस्ट बी अवेयर कि आपके जो पार्टनर हैं उनके क्या फिनेंसेस है, उनकी क्या सेविंग्स है, वेयर ऑल दीज सेविंग्स आर पार्क्ड इनटू, वेयर ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स आर डन इनटू. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट काइंड ऑफ डिस्कशन विद ईच अदर and also to support each other in the overall journey. So that is one thing which is really important. Also keeping your insurance and your real estate property papers handy, or you must be aware of, because in many cases people are not even aware of what is happening. So that shouldn't be the case. Please be more aware, please और जागरूक बने अपने finances की, और चार्ज लें और एक दूसरे के साथ ओपनली इसके बारे में बात करें. नंबर 4, टॉकिंग ओपनली अबाउट दीज financials will inculcate compatibility and trust with each other, which is so often seen lacking in today's times. तो अगर आप वो चीज़ में ज़्यादा ओपन रहोगे तो फिर आप देखना आपका बॉन्ड भी और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. यू नीड टू बी ट्रांसपेरेंट विद ईच अदर एज पार्टनर्स, एज spouses, as couples. So ये important है to have these conversation, क्योंकि कई बार देखा गया है कि अगर फाइनेंशियल क्लैरिटी नहीं हो तो भी डिस्कॉर्ड आ सकता है, डिसप्लेजर्स आ सकते हैं रिलेशंस में. इट कुड इवन लीड टू वर्स कंडीशंस विद people going into divorces. That financial disclarity is one of the reasons of divorces also. So it is important to set the goal straight कि हमको ये करना है, ये करना है. सब you need to know the importance of having these goals in your life. I'm not saying it's going to be easy. कुछ easy नहीं होने वाला है, क्योंकि एक कपल में two people are involved. Now these people are not similar people. इनके भी अलग अलग aspirations हैं, इनके भी अलग अलग choices हैं. One could be a spender, one could be a saver. one एक प्राइमरी मेंबर हो सकता है अर्निंग, या फिर दोनों अर्निंग मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर देयर कैन बी मल्टीपल. किसी को जॉइंट अकाउंट में they feel the trust and they feel it's safer, but किसी को नहीं, इंडिविजुअल अकाउंट्स ही चाहिए होते हैं. So these are the different scenarios, and so it's not going to be easy to come to a common ground when it comes to the two people also involved. But so compromise and trust will be the key. आपको कहीं कहीं compromise करना होगा, आपको कहीं कहीं trust build करना होगा, understanding होनी होगी. So this is the key, and you see, this is the key for any other relations to survive. So this should be the key going forward. So from now on, say no surprises except when it is for a huge birthday or anniversary gift. वो आप करो बिंदास, उसके लिए there is no stopping, but otherwise no secrets between the partners. So I hope you are liking my video so far, and please like my channel, also share the videos with others. I have also made a similar video on how to raise financially responsible children in today's time, the link of which I have shared in the description. Do check it out. So let's continue. Hi, so till now we have discussed why it is important to have financial goals for couples. Now we will see how you can go about it, how you can get the conversation rolling, how you can start about it. So let's see how we are going to talk about it. So see, you can definitely have shared responsibility. ऐसा नहीं है कि कॉमन गोल है तो दोनों लगे हैं साथ में ही, नहीं, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर सकते हैं. वन पार्टनर could take care of the day-to-day expenses of the recurring bills etc, and the other can look after the long-term financial needs, financial investments of the family. What I'm trying to say कि try to achieve that common goal. एक common understanding होनी चाहिए कि हमारा
फिनेंशियल जो टारगेट है वो क्या है, हमको क्या अचीव करना है। तो वो जो लार्जर फिनेंशियल पिक्चर है दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, एकदम एचडी पिक्चर होनी चाहिए, तो दोनों पार्टनर्स को वो क्लैरिटी रहे। तो इससे क्या होगा, आप दोनों के रिलेशन में भी आप देखना ऑटोमेटिकली वो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। एंड ऑल्सो यू आर बिकॉज फिनेंस इज वन ऑफ द मेजर हेडेक्स। आज आप काम कर रहे हो, कल आप रिटायरमेंट हो सकता है आपका, आज आप हट्टे कट्टे हो, कल आपके साथ भगवान ना करे कुछ हो सकता है। सो दीज are very, finance is a very important thing for a family to live together, to nurture, to grow together. So that is why it is important to have these conversations, and so you can definitely divide the responsibilities, but you must be clear of the overall financial picture of you as a couple or you as a family. Now next what I would like to say कि these should be ongoing discussions. ऐसा नहीं है आज आपने वीडियो देखा चलो let's sit down, let's have a financial discussion of a family और एक बार ही क्या हो गया, नहीं, वीडियो देखिए, डिस्कस करिए, पर एक बार में स्टॉप मत करिए। दिस शुड बी ongoing discussions. आप you can do it whatever is convenient for you, monthly, half yearly, annually तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं annually मत करिए, fortnightly करिए, monthly करिए, bi-monthly करिए, because these are important discussions to be had with your पार्टनर। और ये भी आप ना इसको सिर्फ टाइम टू टाइम आप करेंगे तो आप देखिए, क्योंकि आपके भी जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स थे, जब आपने कुछ एक टारगेट सेट किया था, वो भी चेंज होते हैं पीरियोडिकली। सो दीज कैन ऑल्सो चेंज, एंड बेस्ड ऑन दैट यू मस्ट होल्ड दैट डिस्कशन विथ योर पार्टनर। नहीं तो आपने कुछ सेट किया, दुनिया बदल गई, टाइम बदल गया, तो आप क्या फ़ायदा हुआ। तो उसमें आपको अपडेट होना होगा, आपको अपग्रेड करना होगा, आपको रेगुलर होना होगा। सो have these ongoing discussions, बस एक बार वीडियो देख के मत करना। एंड देन सेकेंडली आई वुड लाइक टू से कि इसमें आपको क्यों इतना ओपन होना चाहिए, बिकॉज अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, अगर हम normally like back if we go back to some decades, so because I have seen most of the females who are homemakers of their in their households, बहुत से हस्बैंड्स अपना ये शेयर नहीं करना चाहते, उनकी कोई डेट ऑब्लिगेशन हो जाती है, उनको कोई बिजनेस का स्ट्रेस हो जाता है, उनको कोई भी फाइनेंशियल डिलेमा हो जाता है, दे आर नॉट discussing the same with the wives. Why? Because he is the primary earner, he is the bread earner. नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए. She is तो ये मैंने बहुत देखा है, especially in India, especially if I talk about our mothers or our like एक दो जनरेशन्स पहले की अगर हम बात करें, तो ये सीन अब डेफिनेटली चेंज हो रहा है। विमेन आर कमिंग फोर्थ एंड दे आर शोल्डर टू शोल्डर, दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर कंट्रीब्यूटिंग, एकदम इट्स लाइक सिमिलर वो है। लेकिन अगर हम उस हिसाब से देखें, सो दे शुड बी ऑल्सो मोर अवेयर. So you should make an effort to have a conversation, discuss all. इससे क्या होगा, आपका भी मन शांत होगा, and she will also feel involved, and she will definitely contribute, because homemakers are the best people. You can go for savings, and you could go for tips. तो ये ऐसे उनको डिस्काउंट ना करें, उनके साथ ओपन कॉन्वर्सेशन ले. Also, I would just like to point out that these are few exceptions that I'm talking about. Generalized बिल्कुल नहीं है. And the last point I would like to say कि that आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को किसी और के फाइनेंशियल गोल्स के साथ कंपेयर मत करिए. वी आर वेरी डिफरेंट, वी आर ऑल्सो डिफरेंट एज इंडिविजुअल्स, एंड वी आर ऑल्सो डिफरेंट एज कपल्स. हम अलग बैकग्राउंड से आए हैं, हमारी अलग अपब्रिंगिंग है, हमारी अलग प्रायोरिटीज़ है, हमारे अलग एस्पिरेशंस हैं, चॉइसेस हैं, पैशंस हैं. So do not compare your financial goal with that of your friends or your other relatives, क्योंकि सबके अलग अलग होंगे ना वो सारे गोल्स. तो आप उनका कुछ और गोल है, उन्होंने किसी और चीज़ के लिए सेव किया. सो डोंट लेट देयर डिसीजंस, देयर गोल्स influence you or bog you down. No, you go ahead and you make your own plans. So these are unique plans. These are different plans, so do not be influenced by those of others. So in closing, I would just like to say that couples have so many goals that they want to achieve. The social media is swarming with hashtag couple goals, but in my opinion, in my view, financial goals should be at the top of your priority list. I have been married for 15 long years, and from my experience I can say that it is really important to hold these discussions, or it will also automatically lead to that strengthening of your bond. Your love, your understanding will grow as you age, as you grow older. So
very important to have this conversation with your partner, with your spouse. So what are you waiting for? Just go and say I do to all your financial goals. So that was all from my side. I hope you like my video. Please also share it with others, and also subscribe to my channel. I'm new to this channel platform, so show me some love. I hope to see you back again. Bye and have a nice day.